journalist purportedly on the ground that judiciary was being maligned, and they apprehend that journalists will be arrested when they attend the office of the FIA. The learned Italian journalists state that the honest criticism, a judgment or an order is not a crime, and no coercive action will be taken, nor criminal case registered in this regard, and extend an undertaking on behalf of the federal government. 4. During the hearing, reference was made to the judgment of this court, PLD 2019, Supreme Court, page 318, wherein the founder of Pakistan was quoted, who wanted journalists to be responsible, independent, and fearless, and he had welcomed criticism as under. The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust, and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless if I go wrong, or if the leagues goes wrong in any direction of its policy or a program. I want you to criticize it honestly. The President of Supreme Court of Bar Association is present, and since the matter is one of the fundamental rights of the citizen, was asked if SCBA would assess the court, and he stated that he will do so to come up. अब आप पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा पॉइंट ये सर, अगर SMC 4 is restored and we are arguing on that, your lordship order of if SMC 4 is restored and we are restored sir, उसमें एक जो it was never disposed of, it's pending. Yes, it was, yes. जी, to restore, there's no question of restoring it arises. I would like to, we were supported your lordship order of 2-member bench before the 5-member bench when they were passing an order. आज की बात बताएं ना. मैं आज की बात कर रहा हूँ. मैं आपका जो ऑर्डर था ना 2018-21 का, उसको अगर मुझे इजाजत में पढ़ लूँ, इट वाज अ वेरी. नहीं, आपको पॉइंट बता दीजिए ना. पॉइंट सर ये बताता हूँ कि हमें पता है सारे ऑर्डर्स. जी सर, नहीं सर, वो जो आपने डायरेक्शन पास कर की ना उस ऑर्डर के अंदर आया, उसकी कंप्लायंस हुई है या किस हद तक हुई है? द फेडरल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू दैट. ओके, एक सेकंड. कौन सा तारीख का ऑर्डर? ये 20 अगस्त 2021, 2-member बेंच ऑर्डर, और ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव योर लॉर्डशिप ऑर्डर है. एक सेकंड. 20 अगस्त 2021. मुझे दिखा दें, मेरे पास 30 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, पता नहीं क्यों. चला बिस्मिल्लाह की. योर लॉर्डशिप, ये ऑर्डर 20 अगस्त 2021. An application has been submitted in court by 5 working journalists, including the President of Press Association of Supreme Court and the former President of said association, alleging large-scale violation of fundamental rights enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution, and that the government and the organization agencies under its control are primarily violating these fundamental rights. Number 2, the applicants state that the journalists are harassed, intimidated, attacked, and shot at, and there are no consequences for the perpetrator, and it is further alleged that those who ये तो लंबा ऑर्डर है, जरा पॉइंट बता देना, इतना तो पूरा दिन निकल जाएगा. बेंच तो बन गई है ना इस पे. अब आप इसको कोई वजह बता देना. ये पॉइंट वो पॉइंट है पेंडिंग, ये तो उसके बाद तो बेंच बन गई है. 5-6 पेज का ऑर्डर है, तो पूरा निकल जाएगा इसमें. इसमें सर जो डायरेक्शन पास किए ना बेंच, नहीं डायरेक्शन आप बता दीजिए ना. बन गई ना, वो डायरेक्शन अभी भी हो सकती है, इसमें कैसी सी बात है. आप बताते रहिए. पेज नंबर 5, पैरा नंबर 5 से शुरू कर. सिर्फ बता दीजिए ना, आप खुद बताएं ना क्या डायरेक्शन चाहिए. सर मैं पढ़ के बताऊंगा ज्यादा. कमाल है. आप वकील को तो खुद बताना चाहिए ना. इसमें आप क्या, मैं आपका नहीं सर, इसमें आपने जो ऑर्डर, आई डोंट नो व्हाट यू वांट, यू जस्ट से ये मुझे चाहिए, ये कर दें, वो कर दें, हम सुन लेंगे आपकी बात. योर लॉर्डशिप, मैं पैराग्राफ 6. आप पैराग्राफ छोड़िए ना, अपने तौर से बताइए ना कोई चीज. मैं ये बता रहा था आप एक तो डायरेक्शन. यार हमें छोड़ दीजिए ना, आपका केस है या हमारा केस है? सर आपका केस है, मैं कहता हूँ जो ऑर्डर आपने दिया है, डायरेक्शन दी है, आया वो कंप्लायंस. हम पूछ लेंगे उनसे. इतनी सी बात है, इतनी लंबी तकरीर क्या करें, इनसे पूछ लेंगे, ये बता देंगे हुई है नहीं हुई है. अगला पॉइंट कोई बताए ना. तो रिपोर्ट ऑलरेडी कॉल कर ली है ना, कल ही वो कह दिया था कि इन सारी इस ऑर्डर में और कल की रिपोर्ट में बड़ा डिफरेंस है. ये जो इन्वेस्टिगेशन जिन FIRs पे हो रहा था, जो 4-5 FIRs का तस्करा हुआ, उन पे तो इनको ऑलरेडी कहा है कि पढ़ लेता हूँ. जो भी इस वक्त अपडेट है, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो तो ये फाइल करेंगे. इसका पैरा 6 पढ़ देता हूँ बस, उसके आगे फिर मैं खत्म कर लेता हूँ. दो बातें करता हूँ. The ever so frequent attacks on journalists and their abduction, including the Federal Capital Islamabad, is another violation of
Fundamental Rights, which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in its Article 9. भाई अब आप देखिए ना, अब आपका you are in a way conflicted. You are yourself the government. एक से सुन तो ले ना। जी सर। जब जर्नलिस्ट से आप मिनिस्टर बन गए तो अब जिम्मेदारी तो आप पे भी हो गई, आप भी तो हुकूमत हैं आप। सर फेडरल गवर्नमेंट सुन तो लीजिए ना। जी सर। ये ऐसे तो नहीं होगा ना सर। हम मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम जर्नलिस्ट की पिटीशन उठाते हैं, कुछ जर्नलिस्ट पीछे हट जाते हैं, भाई पता नहीं रीजन क्या है। अब आप कह रहे हैं हुकूमत से पूछें, किस हुकूमत से पूछें? बलूचिस्तान की हुकूमत से पूछें, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर। तो फिर आप रेजिग्नेशन भी दे दीजिए साथ साथ सर। वो नहीं, अब जरा ऐसी आप बातें जो कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका पॉइंट बता दीजिए ना। यू आर अब तो आप ही के खिलाफ हम ऑर्डर भी करेंगे ना। अब आप 2 टोपियां पहने हुए हैं, सोच लीजिए, आप कह रहे पढ़ लें, चलें। मैं पैरा 6 चलिए। That ever so frequently attack on journalists and their abduction, including the federal capital of Islamabad, is another violation of fundamental right, which has been raised in the application. It is stated that the Constitution, its Article 19, guarantees. ये पता है बात है ना, कोई पॉइंट बता दीजिए सर। ये मैं सिर्फ सर मैं 2 मिनट लेता हूँ सर। मैं पैरा पढ़ लेता हूँ, इसके अंदर बड़ा हमें पता है, हम पढ़ के आते हैं कोर्ट सर। इसमें पढ़ लीजिए अगर आप तसल्ली। अटॉर्नी जनरल साहब, इस पे तो आपको डायरेक्शन कल वैसी मिल गई सर। ये लदी चीज है सर। काइंडली मुझे लेट मी रीड। आप बताना क्यों नहीं चाहते हैं हमें? मैं सर बता रहा हूँ, लेट मी रीड, अलाउ मी टू योर लॉर्डशिप। काइंडली It is stated that the Constitution in Article 9 guarantees the right to one's liberty, and Article 10 of the Constitution safeguard illegal arrest and detention. This matter becomes a matter of concern when the perpetrator are not arrested, and all the more so when it happens under the cameras of the Safe City project. This is the very important, Your Lordship. Islamabad inability in this regard may suggest incompetence, which may constitute dereliction of duty or far worse abatement, which is an offence. Therefore, notice be also issued to the Inspector General of Police Islamabad. पढ़ लिया हमने, पूरा पढ़ लिया, आपसे आगे हमने पढ़ लिया। आधे पॉइंट क्या आपका? अब सर ये है कि द सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में वर्क कर रहा है। आप हमें पॉइंट बता दीजिए प्लीज। पॉइंट ये है कि बिलियंस ऑफ रुपी हैज बीन स्पेंड इन द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। जो भी जर्नलिस्ट के साथ मामलात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप पॉइंट बता दीजिए प्लीज। सर पॉइंट बताएं, वकील का काम होता है पॉइंट बताना। पॉइंट ये बता रहा हूं, बिला वजह हमें तकरीर करना, हमने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं बातें। ये नेक्सस बता दीजिए ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद। सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद है कि जो लोग दिन दहाड़े अबडक्ट होते हैं, वाई द सेफ सिटी। तो आप हुकूमत में हैं या नहीं? मैं सर मैं आप मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल केयरटेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर, पर यू कैन नॉट। आर यू आर हेल्पलेस? सर इसमें तो पूरी यू आर हेल्पलेस। यस ऑफ कोर्स, मेरे खिलाफ एफआईआर है सर। आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट इनक्वायर। Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? Everybody knows who is running the country. Don't say these things. For a lawyer it doesn't look good. Yes, of course. Either say I'm a डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट घर में? Everybody knows it. Then say it. Then say it. Sir, if I'm a caretaker, don't say this, please. Don't. इधर आप एक सेंसेशनलिज्म चाहते हैं तो कर लेते हैं, हम सीरियसली इस मैटर को अटेंड करना चाह रहे हैं। सर हम भी सीरियसली आपको सेंसेशनलिज्म चाहते हैं। एवरीबडी नोज इट, पता नहीं, आई डोंट नो इट। आप मुझे बता दीजिएगा, आप एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, हम सीख लेंगे आपसे कुछ। नहीं सर, आपको एवरीबडी नोज इट। भाई ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालत है, ये खड़ा नहीं है, ना पार्लियामान है, ना कोई प्रेस का कॉन्फ्रेंस। आप जाके कर लीजिए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जितने मर्जी है। अगर आप, हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं तो नहीं चला रहा हूं। सर मैं इधर ऐसी बातें आप कर रहे हैं, मतलब आप अपना मिनिस्टर अपना ही अपने क्लाइंट के खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर। खिलाफ की बात नहीं है सर, मैं हकीकत बता रहा हूं जो आप अगर। अच्छा बस आप बता सकते हैं हकीकत, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। मैं लिख के मैं हकीकत बताना चाहता हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता आज तक। सबको पता है सर। मिनिस्टर